Hello, Namaste. I'm Nandita and I hope you guys are doing fine. And I'm in my favorite place, the mountains, of course. I had always been wanting to come to this place to put it in the form of a vlog. And this time I'm going to take you to this quite lesser known region in the Mandi district in Himachal. And the last time I was here, of course, I wasn't vlogging. But when I came here, I simply fell in love with this place. Thachi is certainly one of those underrated places in Himachal, and I know of very few people who have actually ventured in this terrain, since it's not really accessible directly from the main tourist spots here in Himachal. So this is going to be partly very soothing to the eye kind of a temple trip, and partly exploring the forest trails and village life, of course. Come on. Aroma in the air, it has I would say, thousands and thousands of apple trees. This is another apple heartland which is unknown to the common people. Mr Ghanshyam, our homestay owner, he agreed to take me to this amazing apple orchard. सेब अभी बहुत छोटे हैं, but nonetheless it's quite a beautiful sight, and I'm always happy to be among the apple trees, the orchards. I mean, this is something very soothing to the eyes. So after a 40-minute drive from our homestay in Thachi, we have reached Shetidhar temple. ये बहुत पुराना नाग देवता का मंदिर है यहाँ, and this valley view is just superb. ये शेटीनाग मंदिर है, ये सराज वैली में पड़ता है, और यहाँ पर दो वैली है, थाची वैली और सराज वैली। तो शेटीनाग का मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी जो निकाशी है पूरी लकड़ी की निकाशी है, जो कि यहाँ के स्थानीय कारीगरों के द्वारा जो की गई है। These temples are treasures. I rather call not just ancient temples, but heritage, treasure, or not. Amazing craftsmanship, amazing workmanship by the locals.
Bithu Narayan temple is an ancient temple in Thachi, which is a bit unique as compared to other temples in Himachal. Himachal के बाकी मंदिरों से ये मुझे थोड़ा अलग लगता है because the kind of the colorful art that you can see on the wooden carvings here. It's indeed a wonderful setting for a temple with these tall deodar trees and not to miss the 11-headed stone statue of Lord Vishnu, which is of course kept under lock, obviously because it is an idol which is ancient and very expensive. Now this is something very unique. I haven't heard of a Vishnu idol and this bigger statue with 11 heads. So this is something very antique to this and unique to this place. Even these small stone carvings lined up in the temple compound. What a beauty. ये पुंडरीक ऋषि का टेम्पल है ये। तो पुंडरीक ऋषि इतना वेल नोन नहीं है, आपने इधर सराउंडिंग में जितना भी आप घूमे होंगे तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि है, पराशर ऋषि है। तो पुंडरीक ऋषि का टेम्पल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। पुंडरीक ऋषि का एक टेम्पल उत्तरकाशी में है जी, और एक दूसरा टेम्पल एक यहाँ पे है ये। तो पुंडरीक ऋषि जो थे वो भगवान श्री राम के वंश में चौथे राजा थे, कुश के वंश में। तो रियासत उनकी उत्तरकाशी थी। तो फिर वो राजपाट त्याग दिया उन्होंने, फिर वो ऋषि बन गए थे। तो फिर वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे वो। तो तब से उनका ये टेम्पल यहीं पे, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बहुत सालों पुराना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एंशिएंट टाइम से किसी को मालूम होगा कि कितने साल पुराना होगा लगभग? जी नहीं, ये तो हमारे बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैम इधर ये तालाब है ये, तो ये भी हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं मालूम है कि ये कब से है ये इधर। यहीं से पानी आता है? हाँ, यहीं इसी में से पानी आता है ये। और जो ये मछलियाँ हैं इधर, जो फिशेज जो हैं इधर, ये इनका स्ट्रेंथ ना कभी ज़्यादा बढ़ती है ना कम होती है, बस इतनी ही रहती हैं ये। जी, मतलब ये बच्चे नहीं देती? बच्चे देती हैं, लेकिन मतलब इनका जो जैसे जो आबादी है, नंबर जो है वो इतना ही रहता है। जी बिल्कुल, ये बहुत खास बात है। ये चीज़ है इधर। तो ये इलाका बहुत दूर है, अलग है, लोगों को नहीं पता लगता, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आता? नहीं, एक्चुअली मैम पहले यहाँ पे रोड का फैसिलिटी नहीं था। तो ये रोड अभी रिसेंटली 8-10 सालों में ये बने हुए हैं रोड ये। तो उसके बाद यहाँ पे फिर लोग अब इतना थोड़ा ले रहे हैं इंटरेस्ट। बाकी हमारे लिए तो इधर ये सब कुछ जो भी है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल कुल देवता है हमारे ये जी। This is one place where I can sit for hours. Only if I had some time in hand, some more time at least. Abundance of peace, birds chirping, and certain birds that I haven't even seen yet, ever in life. And then this ancient treasure, and an absolute silence around.